Hi, so my profile is 997. आपने ग्रेजुएशन में क्या किया हुआ है? English honors BA. I have done the graduation pass out year is 2024, and I took a drop year to appear all these MBA entrance exams. Yes, this is my interview experience for Great Lakes Chennai campus. तो ये ग्रेट लेक्स का जो इंटरव्यू आपका शेड्यूल हुआ था, इसकी डेट एंड टाइमिंग क्या थी? It was on 25th March, 26th March 2025 और टाइमिंग थी सुबह 11:15 बजे ऑनलाइन मोड। हमारा एक लॉबी थी, जूम मीटिंग थी, तो वी वर सपोज टू वेट इन द लॉबी रूम जो था। एंड देन बहुत सारे पैनल्स थे, तो हमें अपने टाइम आने पर उन पैनल्स में भेज दिया गया। ठीक है, तो कितने पैनलिस्ट थे इसमें एंड कैसे स्टार्ट हुए सारे क्वेश्चंस? Okay, so there were two panelists, one male and one female. They were both in their late 50s. So, start हुआ. The first thing, I have completed my graduation in English honors, as I said. So the first question they asked me was, since you have completed your graduation in literature, why do you want to pursue MBA? Why not carry forward your career in literature masters? So I told them the reason. उसके बाद we talked a lot about books, William Shakespeare and stuff. So they said that you look like an avid reader, so you should have taken your career जिसमें बिजनेस भी हो और लिटरेचर भी, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म एक तरह से इन दिस फील्ड ऑफ बिजनेस। एंड देन आई टोल्ड देम कि मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में एमबीए परस्यू करने का डिसाइड किया था। सो दे आस्क्ड मी what was the thing that made you decide. Basically they were asking me why MBA, and then in the last year they asked if I have learned something about the subjects in MBA or anything related to MBA, if I have the knowledge of the subjects. Then the lady interviewer asked me, she gave me a name of a book, paperback, who has authored the book. It was William Shakespeare. उसके बाद they asked me कि since I have taken a drop year 2025 तक एक साल कॉलेज के बाद, so what did I learn in that year? Did I learn Python coding? I said no, because that was absolutely off my field. So Python coding and Excel sheets. After that, they asked me what a good leader is. I told them about my leadership skills, what I cultured, matlab the qualities that I owned during my graduation. So वो सब मैंने कैसे स्टार्ट करा, कहाँ तक गई मैं। uh, उसके बाद they asked me, what is a leader? What are the good qualities of a leader? Then I've always seen other interviews in which they ask about the ministers, the union ministry. So I remembered a lot of them by heart, and then they asked me who is the railway minister, which I didn't know. So I must suggest that in every interview they ask about the ministers. So people who are going to appear to the interview, please go through the list. And then they asked me about my specializations. I told finance and marketing. So are what have you learned about them? Like in college, I said that no formal learning, but college with societies may, we learn about it. We actually practice it in some way or the other. Then they asked me, where do I see myself in next 5 years? I was giving a normal vague answer if it can be, but they wanted it to be very specific in what company, what role exactly, what role in what company, in what sector. For example, FMCG, retail sector, etc. Uh, then they asked me to tell me something about either marketing or finance in deep. So I told them about marketing. There are two types: in-house marketing and marketing firms. तो उसमें आप कहाँ अपने आप को देखते हो exactly? There were a lot of questions on this thing. Um, yeah, this was all. इसमें करंट अफेयर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था या कुछ और आपके लोकेशन की, आप कहाँ के रहने वाले हो उस लोकेशन के बेस पे क्वेश्चन हो या जियो पॉलिटिकल कोई क्वेश्चन हो? नहीं नहीं, जियो पॉलिटिकल नहीं था।
हाँ, ये था कि आप चेन्नई में क्यों जाना चाहते हो, आप नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ, या देयर वाज अनदर क्वेश्चन आल्सो आई फॉरगॉट कि देयर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन द सदर्न इंडिया, तो एक एक के नाम बताओ कौन किसके ऊपर है। एग्जैक्टली वैसे ही आई वेंट, जैसे मतलब हो रहा है मैप में नीचे से ऊपर तक लेके गए उनको। और आप चेन्नई क्यों आना चाहते हो, व्हाई नॉट, व्हाट अदर goals have you got and why Great Lakes Chennai stands apart from them. Up, I told about the placement reports, everything that I've seen, which is different from other colleges. So they wanted to know more about it. And yeah, location, how is location an important factor in your decision? Why is it that? So there were very specific questions, पर जो भी क्वेश्चन था उस पे बहुत देर तक चलता रहा था। इस तरह का टाइम दे रहे थे, ऐसे बैक टू बैक नहीं थे, पर मतलब आई थॉट कि आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, जितना मुझे इसके बारे में पता था, दे वुड कीप आस्किंग अबाउट द सेम क्वेश्चन। ऐसा किसी किसी टाइम पे लगा था कि मेरा आंसर खत्म हो गया है, इसके बारे में मुझे और नहीं पता, बट दे स्टिल वांटेड टू नो मोर, मुझे एग्जैक्टली कितना पता है इस चीज के बारे में। ठीक है। जैसे मार्केटिंग के बारे में आपसे पूछा गया तो उन्होंने आपसे फ्रेमवर्क्स भी पूछे, मार्केटिंग के क्या फ्रेमवर्क्स होते हैं, इनको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ पर किस फ्रेमवर्क को यूज करते हैं, ऐसा कुछ? So I told them that I do not have any formal knowledge about marketing. Like I have not studied it anywhere, but because I was part of a lot of societies clubs, so I know how it works, like the on ground reality, हमें market करना होता है चीजों को and stuff. So they asked me more about it, but I was able to tell them some incidents and events from my college, so they were kind of satisfied by the end. This was more or less the interview. कितनी देर चला है पूरा प्रोसेस आपका? Um, 10 से 15 मिनट। चलिए सोनल, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। एंड गाइस, आप भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। आप सोनल के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, इनकी लिंक्डइन आईडी भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप इनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर